Okay, assalamu alaikum everyone. I hope you guys are all well. So in this session, we are going to be doing this paper, May-June 2022, paper 5, variant 3. इसके हम कुछ selected questions कर रहे होंगे, not the whole paper, but we'll do all the questions that are relatively more difficult. जो बहुत आसान वाले questions हैं, I'm going to skip them to save some time. You can also find all the other May-June 2022 papers already solved. बाकी सारे papers already solved हैं. Paper 1, Paper 3, M1 and S1. बाकी सारे variants. You can find them in the yearly past papers playlist. They're all available there. Walaikum assalam, Sir Faraz, Usman. Just a reminder, if you're new to this channel, make sure to subscribe first of all, so you get notifications for any of the next videos that I have. Also have a look in the description. Look at the description of this video. You'll find a lot of other helpful content. So I've uploaded all of my recordings for P1, P3, M1, and S1. You'll find complete syllabus covered in those videos. उनके सबका playlist का link यहाँ पे नीचे description में available है. There are also some quick revision videos that I've uploaded on the channel, which a lot of people find helpful every single year to revise just before their exams. You can have a look at that. The link for that is also in the description. Also, all the yearly past papers that I've solved until now, you can find them in the link below as well. आपके पास yearly past papers के playlist का link भी वहाँ पर है. Okay. So 2021 के papers or 2022 के papers, May, June के, you'll find all of them there. Also March 2023 papers. Okay. In the next 8 to 10 days now, I'll be doing all the October, November 2022 papers on this channel. P1, P3, M1, and S1. You can also find those recordings in the next week or so, inshallah. Okay. So that's the plan for the next week as well. Today, I'm doing this one paper first of all, paper 5-3. उसके बाद फिर हम October, November start कर देंगे. At 5 p.m., I'll be doing paper 1, variant 3 of October, November 2022. And also at 8 p.m., inshallah, I'll be doing paper 4-3, which is M1 of October, November 2022, inshallah. ठीक है, October, November 2022 के दोनों पेपर सबसे ज़्यादा मुश्किल वाले variants थे. Paper mechanics का I think threshold was only 30 out of 50. और जो stats का वो P1 का जो paper था, that's around 53 probably out of 75. 53 or 55, I think. That was pretty low for an A for a paper 1. Okay, now let's begin with this. Anas, you won't really need extra sheets because they have an additional page at the end of the paper. In fact, mostly 2 pages. So you can use those additional pages if you need any extra space. ज़्यादा और तो नहीं चाहिए होता. But even if you need something after that, तो आप ले सकते हैं, but उसकी ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए वैसा. Okay, now let's start with this one. So May, June 2022, paper 5, variant 3. Let's begin. इसमें हम देखते हैं तो मुश्किल वाले questions हैं, we'll do that. Okay. So the first question is about cumulative frequency curves. You have this data given. Already आपके पास cumulative frequencies दी हुई हैं. You have to plot these values, draw a cumulative frequency curve, then use a graph to estimate 20th percentile. That's not that difficult. You can do that. I'm going to skip this. Second question, you have to find the mean and median. And then in the last part, it says, give a reason why the median is likely to be more suitable than the mean as a measure of the central tendency for this information. Now, I expect you to find the mean and median yourself. That's pretty straightforward. Let's have a look at the last part of this question. It says, give a reason why the median is likely to be more suitable than mean as a measure of central tendency for this information. अब देखिए median और mean में आप कैसे decide करते हो? If the data has any extreme value, any outlier, then mean is not a suitable measure. तो आप median use करते हो उस case के अंदर. So that's how you differentiate between whether you should be using mean or median. तो अगर आप इस data में देखें, do you find any extreme value? Any value that's far apart from the rest of the values. तो अगर आप देखें ज़्यादातर values जो हैं वो आपको नजर आ रही हैं between 4 and 7, right? 4
is the minimum value, 4.1, and 6.9 is the maximum value. But then you have one value here, which is 19.4. 19.4 की वजह से आपका mean effect होएगा. It's an extreme value. So mean is not going to be a good measure because of this outlier. So what do you say in this case? You say median is more suitable. Why? Because the data has an extreme value. You can say an extreme value or an outlier. But this is not going to be enough. You are not going to write this statement only. You're also going to specify that the outlier is 19.4. ठीक है, तो स्टार्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने कॉन्टेक्चुअलाइज करना है जो भी आप आंसर्स दे रहे हो उसको आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट में जो डेटा दिया हुआ है उससे रिलेट करना है. सो यू हैव टू स्पेसिफाई कि आउटलायर कौन सा है. वो द आउटलायर इज 19.4. ओके, बट अदरवाइज एग्जामिनर को लगेगा आपने बस याद की हुई है स्टेटमेंट, आप एज इट इज लिख कर आ गए हो. You also have to relate it to the question, so you have to write down that the outlier is 19.4. Okay. All right, let's move on. नहीं उस्मान, अक्टूबर नवंबर 2022 के पेपर्स की बात कर रहा हूँ. 2021 तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है. You can find them in the playlist. 2022 के पेपर्स में आज शाम से स्टार्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह. Okay, अच्छा, let's move on. एक्स्ट्रा शीट्स आपको चाहिए होते नहीं है ना रियली. आपको 2 एडिशनल पेजेस मिलते हैं मोस्टली एट द एंड ऑफ द पेपर. यू शुड फाइंड देम sufficient. Okay, but it depends on from center to center. वो आपको एक्स्ट्रा शीट और देते हैं कि नहीं देते, इतना मसला वैसे आपको होगा नहीं, बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली रेयर कि आपको एक्स्ट्रा शीट उसके बाद भी चाहिए जो उन्होंने 2 पेजेस दिए होते हैं. ओके, अच्छा, the random variable x takes the values -2, 1, 2, 3. Given that probability of x equals x is kx square, where k is a constant, draw up the probability distribution table for x, giving the probabilities as numerical fractions. Okay, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, probability distribution table बनाना है. Let's have a look at this. So we have these values given, -2, 1, 2, 3. These are the values that this variable can take. Now, how is the table going to look like? Let me draw the structure of the table here, first of all. So it's going to look like this. You're going to have one row in which we'll have x, and in the second row you'll have probability of x. Yeah, so it might be easy. I'm not sure कि kx square आ रहा है तो हो सकता है कोई complication हो. Let's have a look at this. देखते हैं क्या होता है. Probability of x. Okay, x की values क्या है? -2, and then you have 1, 2, 3. Okay, इनकी probabilities find करनी है. अच्छा, probability का formula इसमें दिया हुआ है. आपने क्या करना है, simply इसमें आपने x की value input करनी है और हमें देखना है क्या रिजल्ट मिलता है. ठीक है, so x की value -2 input कर दें. So probability of x being equal to 1, how are you going to find that? Put x equal to 1 here. If you put x equal to 1 here, what do you get from that? K into 1 squared, and that gives you k. All right, but don't just write this value here as yet, because k की value आपने find करके numbers में answer देना है. Okay, all right, उसने लिखा भी वहाँ पे आपको hint देने के लिए, you have to write your probabilities as numerical fractions. Okay, तो आपको k की terms में नहीं देना, आपको numerical value find करके करना. Okay, so how do you find the value of k? Well, what you can do is you can find all the probabilities, but then since the sum of all probabilities should be 1, आप उन total सारे numbers को add करके जब देखेंगे तो sum 1 आना चाहिए, उससे आपके पास k की value आ सकती है. All right, so let's find the other probabilities first of all. What about probability of x being equal to, अच्छा, I skipped -2 there, so -2 भी यहाँ पे evaluate कर लेते हैं पहले. So this is for 1. Let's input -2 as well. That's the smaller value. So आपने यहाँ पे टेबल में वैल्यूज ना ऑर्डर में लिखनी होती हैं. That's better. -2, 1, 2, 3 ascending order में लिखेंगे. So you have k into -2 whole squared. What does that give you? That gives you 4 times k. Okay, similarly you find the probabilities when you have x equal to 2. That's going to give you 4k as well. And then you have probability of x equals to 3, and that gives you k into 3 whole squared, which is 9k.
These are the probabilities that you get for these individual for these individual values of x. What you have to do now is add all of these probabilities up. What do you get from this? You get 18k. Okay, 18k आपके पास आ गया. इसका मतलब ये है कि 18k has to be equal to 1. If 18k is equal to 1, that gives you k equals 1 over 18. आपको k की वैल्यू निकालनी जरूरी नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं 4k divided by 18k, and that's going to give you the result, and that's okay as well. आपको k की वैल्यू पता चल गया है, आप k की वैल्यू इनपुट करके देख सकते हो, या फिर आप वैसे ही कर सकते हो 4k divided by 18k. What does that give you now? Okay, let's just input this value. In fact, not 4k over 18k. Sorry about that. That was a slip of tongue. What I mean is, k की वैल्यू आपने यहाँ पे इनपुट करनी है, या फिर आप करोगे that's also fine. वैसे एक ही बात है, ठीक है, सही है. Let's just input these values and see what you get from this. 4 into 1 over 18. What do you get from this? 2 over 9. ये आप यहाँ पे लिख देंगे पहले. इसको अनसिम्प्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं. दैट्स योर चॉइस. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में वैसे अक्सर अनसिम्प्लीफाइड भी लिख देते हैं. दैट्स आल्सो ओके. अगर आप डायरेक्टली लिख दें, दैट्स गोइंग टू सेव योर टाइम. लेट्स जस्ट डू दैट. 4 over 18. Next is going to be 1 over 18. And then you have 4 over 18. And then finally you have 9 over 18. Okay, these are the probabilities that you have to give there. Let's move on. Expected value of x and variance of x. इसका हमने सब formulas apply करने हैं. It's not that difficult. You can do that. Expected value of x का formula आपके पास क्या होता है? Sigma xp. Just apply that formula. Variance of x का क्या formula होता है? Sigma x square p. It's given in the formula sheet minus expected value of x whole squared. आपने करना क्या है? अपने टेबल के अंदर दो रोज ऐड कर लेनी है. आप पेंसिल से कर लें, आप दोबारा से टेबल नीचे बना लें, वहां पे ऐड कर लें. One row is going to be xp and the other is going to be x squared times p. Sigma xp आपको मीन दे देगा. फिर आप sigma x square p निकालेंगे, वो यहाँ पे इनपुट करेंगे और मीन इधर इनपुट कर देंगे और आपके पास वेरिएंस भी आ जाएगी. ठीक है, दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट. यू कैन डू दिस एज वेल. यस अनस, k की टर्म्स में नहीं लिख सकते यहाँ पे. You have to write numerical values, right? Numerical fractions k के terms में देंगे, you will not get full marks. Okay. All right. So yeah, find कर लेंगे expected value and variance. That's not that difficult. It's a pretty straightforward one until now. Let's do this one. Question number 4. Let's try this. It says Ramesh throws an ordinary fair six-sided die. Find the probability that he obtains a 4 for the first time on his 8th throw. Now, that question statement should remind you of something. Obtains a 4 for the first time. Getting something for the first time. Being successful for the first time. Does that remind you of something? That's geometric distribution if the conditions are all met. Geometric conditions क्या होती हैं? You should have two outcomes. Can you formulate it as two possible outcomes? Obtaining a 4. If you call this a success, if you say this thing, obtaining a 4 is a success, then failure would be not obtaining a 4, right? So you can say these are two possible outcomes. Are the probabilities changing? नहीं, probabilities change नहीं हो रही हैं. First time भी वही probability होगी, दोबारा throw करेंगे तभी probability होगी. Probabilities change नहीं कर रही. All right, and we're looking for the first success. Repetitions हैं, आप वो बस repeat करते जा रहे हो, total number आपको नहीं पता. So geometric की सारी conditions meet हो रही हैं इसके अंदर. So it's a geometric distribution with success being obtaining a 4. So हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहले इसको define कर लेते हैं. So geometric distribution, इसमें probability of success क्या होगी? 4 आने की probability, it's a six-sided die, it's a fair die. 4 आने की probability होगी 1 over 6. What about probability of failure? 5 over 6. Now probability of first success being on the 8th throw, all we're looking for is probability of x being equal to 8. Geometric का formula हमारे पास क्या होता है? It's q raised to power r minus 1 multiplied by p. Or you might also remember it like this: 1 minus p whole raised to power r minus 1 multiplied by p. 1 minus p को हम अक्सर q भी लिख देते हैं.
so it depends on how you've done this. आप दोनों तरह कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, now let's just input values in the formula. Q, which is 5 over 6, whole raised to power r minus 1. R is 8 here, so 8 minus 1, that's 7, into 1 over 6. And now you just evaluate this and see what that turns out to be. 5 over 6 whole raised to power 7 into 1 over 6. Okay, fraction बहुत ही बड़ी आ रही है, तो इसको आप decimals में लिखते हैं, that's okay. This turns out to be 0.0465 to 3 significant figures. All right. Okay, now let's look at the next one. Find the probability that it takes no more than 5 throws for Ramesh to obtain a 4. Now that's slightly trickier. You have to understand the statement first of all. Obtaining a 4, again, we're talking about obtaining a 4 for the first time, right? 5 throws से ज़्यादा नहीं लगता है उसको first time 4 आने पे. It is still a geometric distribution because we're talking about first success. All the conditions are still met. लेकिन उसने लिखा हुआ है no more than 5 throws. How do you write that down? यानी कि 5 throws तक जो है उसके पास 4 आ जाना चाहिए. So you could say this is probability of x less than or equal to 5. No more than 5 है ना? तो 5 हो सकता है या उससे कम हो सकता है. इससे पहले उसको एक दफा 4 at least मिल जाना चाहिए. That is what we are looking for. Now one possibility could be कि आप ये सारे फाइंड करें. 4 उसको मिले first time, फिर उसको मिले second time, and so on. Then you have probability of x equals 5. ये सारे evaluate करें, and that's okay. You can do that. Although it's going to take some time to calculate that, आप ये कर सकते हैं, ठीक है? Remember, geometric में 0 वाला केस नहीं consider करते, binomial में करते हैं, geometric में नहीं करते, because geometric में हम बात कर रहे होते हैं कि first success कब आती है. 0th trial पे तो first success नहीं आ सकती ना, इसमें 0 नहीं include करते. तो this is one possibility. लेकिन ज्योमेट्रिक में ना हमारे पास इनइक्वालिटीज के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है. There are 4 different formulas. I would recommend just you at least remember this one. X greater than r is equal to q raised to power r. Okay? ये आपके पास एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रहना चाहिए मिनिमम. Okay? You can derive the rest of them from this. तो आपने करना क्या है, आपने जो भी आपकी इनइक्वालिटी है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है कि वो x ग्रेटर देन समथिंग आ जाए आपके पास. ओके, फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. नाउ हाउ कैन यू चेंज दिस इनइक्वालिटी टू अ फॉर्म कि आपको ये वाली चीज इवैल्यूएट करनी पड़े. सर, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. आपको चाहिए x लेस देन और इक्वल टू 5. दैट मींस if I were to write down these numbers 1 2 3 4 5 6 7 and so on, the numbers that you're looking for is 1 2 3 4 5. अगर हम इसको ग्रेटर की फॉर्म में हमने करना है इसको, तो रिमेंबर टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है. इन सब केसेस की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, द टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, राइट? अगर हम 1 में से माइनस कर दें, ये वाले केसेस 6 7 and 8 onward, ये सारे केसेस इसमें से माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आता है? We can write it like this. We can say 1 minus probability of x. अब इसको इस फॉर्म में लिखना है, x greater than something, right? तो ये इन नंबर्स को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? 6 से आगे वाले नंबर्स कि हम इस फॉर्म में लिखें उसको. We can say these are all numbers which are greater than 5. 5 से बड़े नंबर्स हैं, तो हम उस प्रोबेबिलिटी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं. x less than or equal to 5 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 minus probability of x greater than 5. ऑलराइट? और आपने ये वाला फॉर्मूला याद किया होगा. जब आपने इस फॉर्म में कर लिया, आप वो फॉर्मूला यूज कर लोगे, उसको इनपुट कर दें इसके अंदर. x greater than 5 की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? It's just q raised to power 5. Input values and you get your result. Q is 5 over 6, so that's 1 minus 5 over 6 whole raised to power 5
and that gives the result. Okay, इस inequality के आगे 3 different forms होती हैं. अगर आपने वो सारी याद की हुई है, that's okay. I personally don't recommend memorizing a lot of stuff because that's just not maths that way. आपने सब कुछ रट्टा लगाया हुआ तो. But if you just remember this one, और इसकी logic आप समझ सकते हैं ये क्यों इस तरह से करते हैं. So I've explained that when I did geometric. लेकिन आप ये बस एक याद रखेंगे, बाकी सब कुछ आपके पास आ जाएगा. Okay, so 1 minus 5 over 6 whole raised to power 5 whole raised to power 5. Let's see what that turns out to be. 5 divided by 6 whole raised to power 5, 1 minus answer, and that is giving me 0.5981, and that's your final answer. Okay, but if you remember the other inequalities, that's perfectly okay. आप वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. तो इसके लिए हमारे पास एक डायरेक्ट भी होती है. अगर आपको वो याद है, x less than or equal to r, that is equal to 1 minus q raised to power r. Okay, you could use that directly if you want, अगर आपको वो वाली याद है. ठीक है, that's perfectly okay as well. अच्छा, let's move on. Now it says Ramesh now repeatedly throws 2 ordinary fair six-sided dice at the same time. Each time he adds the 2 numbers that he obtains. Okay. पहले देखें, he was throwing 1 die. Now he's throwing 2 dice. Each time he adds the 2 numbers that he obtains. Okay. For 10 randomly chosen throws of the 2 dice, find the probability that Ramesh obtains a total of less than 4 on at least 3 throws. Okay. अब देखें 2 dice उसने throw किए at the same time. Each time is adding the 2 numbers that he obtained. So for instance, first time उसके पास जो है वो 2 आया है, second time उसके पास let's say 5 आया है, वो क्या करता है, दोनों को add कर लेता है, इस पे 7 आ जाता है. That's kind of a score. Okay. Now for 10 randomly chosen throws of 2 dice, 10 दफा वो 2 dice throw कर रहा है. Okay. Find the probability that Ramesh obtains a total of less than 4 on at least 3 throws. अच्छा देखिए, 10 times की बात हो रही है, तो आप ये same experiment 10 times repeat कर रहे हो. Okay. उसमें से you are looking at this case कि आपको जो total मिलता है उन दोनों numbers को add करने पे, that is less than 4 on at least 3 throws. तो एक तरह से number of successes की बात हो रही है कि आप 10 times repeat कर रहे हो. अगर आप success को ऐसे define कर लो, that Ramesh obtains a total of less than 4. If you call this a success, right? Obtaining a total of less than 4, we can say this is our success, right? Then what we are looking for is having at least 3 successes. That is what we're looking for. So if you think about it, you can actually formulate it as a binomial distribution कि आप 10 times कुछ repeat कर रहे हो. So n is 10, right? उसमें से आपको minimum 3 successes चाहिए. So basically you're looking for x greater than or equal to 3, where x represents number of successes. So this is a binomial distribution. This is a binomial distribution. First of all, जिसमें n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 10 है, because you're repeating the experiment 10 times. Okay. अच्छा, अब देखें सक्सेस क्या है? लेस देन 4 का टोटल आना. तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको किसी तरह से निकालनी है. जब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास, तो आप बाइनोमियल का फॉर्मूला लगा के ये निकाल सकते हो. Now how do you find that probability obtaining a total of less than 4? Now one possibility is आप वो sum वाला टेबल बना लें, right? So addition टेबल बना लें इस तरह से 1 2 3 4 5 6 वो सारे लिखे हैं वहां पे, और फिर आप देखें कि अच्छा 4 से कम टोटल आपके पास कैसे आ सकता है. That's one possibility. The other possibility is बस आप logically इसको सोच लें दिमाग में, और उससे भी आपके पास हो जाएगा. So it's your choice. ठीक है, आप टेबल बना के कर लें या वैसे ही सोच लें, जिस तरह भी कर लें. टेबल थोड़ा सा आसान हो जाता है. अगर आप डायरेक्टली करते हैं तो it's not that difficult to list on all the possible cases. क्या क्या केसेस हो सकते हैं जब लेस देन 4 टोटल आ रहा हो? अच्छा देखिए, फर्स्ट में अगर 1 आ जाए, 1 के साथ क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ बस, क्योंकि अगर 1 1 3 कर देंगे
तो वो तो 4 हो जाएगा, हमें लेस देन 4 चाहिए. सो दीज आर द ओनली 2 केसेस दैट वी हैव विद 1. 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है. अच्छा, और क्या हो सकता है? फर्स्ट में 2 आ जाए, सेकंड में क्या हो सकता है? फिर 1 आ सकता है. इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? नो. दीज आर द ओनली 3 केसेस दैट वी कैन हैव जहां पे जो टोटल आता है दोनों डाइस के ऊपर, उनका जो सम आता है that is less than 4. यानी 3 या उससे कम सम आना चाहिए. These are the 3 cases that we have. Okay? तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगी यहाँ पे? आपने 2 डाइस थ्रो किए थे. What's the total number of possible outcomes? 6 multiplied by 6. The total possible outcomes are 36. So probability of success here is going to be 3 over 36. All right, you can simplify that to 1 over 12. That's your probability of success. So now it's a binomial distribution with n equal to 10, p equal to 1 over 12, and q equal to 11 over 12. All right. आपको find क्या करना है? x greater than or equal to 3 for a binomial distribution. अच्छा, अब binomial में हमारे पास inequality का कोई formula नहीं होता unfortunately. हमें क्या करना पड़ेगा? सारे evaluate करने पड़ेंगे 3, 4, 5 and so on until 10. That's a lot of calculations. तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं let's flip this. हम 1 में से माइनस कर देते हैं वो वाले केसेस जहां पे 3 से कम है, which is x equal to 0. या तो कोई सक्सेस ना आए, या फिर एक सक्सेस आ जाए, या फिर 2 सक्सेसेस आ जाए. वो केसेस माइनस कर देंगे 1 में से, तो you'll get your probability. Okay, now just input values. Remember, the formula looks something like this. For binomial distribution, x equals r, that is equal to ncr into p raised to power r into q raised to power n minus r. Okay? If you've done a different form for this, that's perfectly okay. Formula sheet में थोड़ा सा slightly different लिखा होता है, वो use कर लें, that's okay. You'll get the same result. इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, but that's okay. आप वो use कर लें. 1 minus x, probability of x equals 0. What does that give you? n की value क्या है? 10. Right? So you get 10c0 into p, which is 1 over 12, whole raised to power 0 into 11 over 12 whole raised to power 10 minus 10c1 into 1 over 12 whole raised to power 1 into 11 over 12 whole raised to power 11. अगर आपकी स्पेस खत्म हो रही है एक लाइन के अंदर, आप उसको नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू कर लें, लेकिन ये वर्किंग आपको दिखानी पड़ेगी. ठीक है, डायरेक्ट आंसर नहीं लग सकता है. अच्छा, so I have 10c2 into 1 over 12 whole raised to power 2 into 11 over 12 whole raised to power 8. ठीक है, sorry, what am I doing there? 2 and 8, yeah, so मैं 12 और 10 को mix कर रहा हूँ. यहाँ पे 11 की बजाय इधर पिछले वाले में क्या होना चाहिए था? This is 9. Okay, so this is what you have here. ये evaluate कर लें, देखिए आपके पास क्या आता है. ठीक है. अच्छा, now इसमें भी it's recommended आप ये इंडिविजुअल वैल्यूज अलग अलग evaluate करके लिख लें, बिकॉज उसका फायदा ये होता है अगर आपका फाइनल आंसर किसी वजह से गलत हो जाए, कोई केयरलेस एरर हो जाए, तो आपको पार्शियल मार्क्स ज्यादा मिल जाते हैं अगर आप ये इंडिविजुअल टर्म्स evaluate करके लिखें. उसमें मार्किंग स्कीम में भी आप देखेंगे अलग अलग लिखा होता है, हमेशा अलग अलग पहले evaluate करके लिखा होता है और फिर उसने फाइनल आंसर लिखा होता है. सो आई वुड रिकमेंड दैट यू डू दैट एज वेल. अगर तो आपका फाइनल आंसर सही है फिर तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इन एनी केस, लेकिन अगर आपका फाइनल आंसर सही नहीं आ रहा, यू विल गेट मोर पार्शियल मार्क्स अगर आपने ये इंडिविजुअल टर्म्स अलग से इवैल्यूएट करके लिखी होंगी. ठीक है. अच्छा, सो व्हाट एम आई गेटिंग फॉर दिस? फर्स्ट मेरे पास आ रहा है 0.41890. अच्छा, इसमें ज्यादा डेसिमल प्लेसेस यूज करने ताकि आपका फाइनल आंसर एक्यूरेट आए. ओके, सो दिस इज एटलीस्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. 4 से ज्यादा लिख लें, दैट्स ओके, मिनिमम 4. अच्छा, नेक्स्ट वन 10c1, लेट्स इवैल्यूएट दैट into 1 divided by 12 whole raised to power 1 into 11 over 12 whole raised to power 9. Okay, this is giving me 0.3808.
एंड देन द लास्ट वन, बस आप वैल्यू चेंज कर लें, वहाँ पे 9 की जगह पे 8 कर दिया और 1 की जगह पे आपने 2 कर दिया. अच्छा, so that's giving me 0.15579. So we can say 1558. Okay, let's evaluate this whole thing, 1 minus all of these, and that should give you 0.0445. That's the final result that you get from this. This is the final answer. Okay. Acha. P3 के सेशंस होंगे 5th के बाद, ठीक है. 5th को M1 हो जाएगा, उसके बाद फिर P3 और S1 पे थोड़ा ज्यादा फोकस होएगा. अक्टूबर नवंबर के बाकी पेपर्स जो P3 के हैं वो 5th मई के बाद होंगे इंशाल्लाह. अच्छा, M1 की अभी एक शाम से स्टार्ट, शाम को होगी, रात को इनफैक्ट 8 o'clock. ओके, M1 का अक्टूबर नवंबर 4-3 वेरिएंट 4-3 जो अक्टूबर नवंबर का सबसे मुश्किल वाला पेपर है 2022, वो हम करेंगे 8 बजे इंशाल्लाह. And P1 और S1 का एवरेज थ्रेशोल्ड, P1 का एवरेज थ्रेशोल्ड इज अराउंड 60, 59 के आसपास, 59-60 होता है नॉर्मली. P1 का फॉर एन A, S1 is like 39-40 for an A normally. Okay, but वो डिपेंड, पेपर के डिफरेंट लेवल पे डिपेंड करता है आपका ऊपर नीचे कितना जाता है. S1 का मैक्सिमम भी जाए तो 41 पे जा सकता है, 42 पे बहुत ही आसान पेपर आ जाए तो. P1 का भी 61-62 से ऊपर नहीं जाता, A के नहीं जाता इतना. ओके, अच्छा, फाइनल आंसर आपके बिल्कुल 3 सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादा हो सकता है अनलेस उसने क्वेश्चन के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन दी हो. ठीक है, क्वेश्चन में अगर उसने बताया हुआ है कि आपको इतने डेसिमल प्लेसेस या इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, देन यू हैव टू फॉलो दैट. Otherwise, you can leave an answer in more than 3 significant figures, and that's perfectly okay. In fact, that's going to be safer अगर आप ज्यादा डेसिमल प्लेसेस लिख कर आ जाएंगे. अगर उसने क्वेश्चन में नहीं इंस्ट्रक्शन दी हुई कोई, तो फिर 3 से ज्यादा लिख दें, that's okay. Okay, let's move on. Question number 5. Let's see if this is difficult. The weight and grams of the apples grown this year are normally distributed. Okay, normal distribution वाले हम सारे question normally कर लेते हैं. Let's do this. Farmer Jones grows apples. The weights in grams of the apples grown this year are normally distributed. So this is a normal distribution. Okay. With mean 170 and standard deviation 25. Apples that weigh between 142 grams and 205 grams are sold to a supermarket. Find the probability that a chosen apple grown by Farmer Jones this year is sold to the supermarket. Okay, अब supermarket में sell करने के लिए क्या condition है? The apples have to weigh between 142 and 205 grams. तो उसकी probability आपने निकालनी है. आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको मीन दिया हुआ है, मीन is 170 and standard deviation is 25. Okay. Now let's find this probability. Probability of X being between 142 and 205. अब देखें, this is a simple normal distribution जहाँ पे कोई डेटा गिवन है, आपको उस डेटा को यूज करके probability निकालनी है. आपको क्या करना है? सबसे पहले इसको Z में कन्वर्ट कर लें. Remember the formula for Z. Z is X minus mu over sigma, right? Let's just use that and convert this to Z first of all. What do we get? Z is supposed to be between 142 minus the mean is 170, divided by sigma, sigma is 25, and 205 minus 170 divided by 25. ये आपको evaluate करना, ठीक है? Let's see what we get from this. इसमें Z का हमारे पास interval क्या आता है? Let's figure that out. Let's actually save some space here. Space थोड़ी कम ही होती है. Okay, so Z is supposed to be between, let's evaluate these two numbers, 142 minus 170 divided by 25, and that's giving me minus 1.12. Okay, and then you have 205 minus 170 divided by 25, and that gives you 1.4. Now remember, आपको Z की values normally 3 decimal places तक चाहिए होती हैं. आपके पास आगे 0 zeros ही हैं essentially, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं if you want, ताकि आपको पता हो next values जो हैं वो 0 ही हैं.
or you can leave it like this as well. That's your choice. It doesn't really matter. लेकिन आप बस 3 decimal places ज्यादा हैं तो उसको आपको 3 पे राउंड ऑफ करना होता है, ये आपको फाइंड करना है. Now how do you find this? You think of the normal distribution curve. This is how the curve may look like, right? Roughly आपकी ये shape होगी curve की. In the middle you would have z equal to 0. Okay. अच्छा, अब देखें एक वैल्यू z की पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है, तो एक लेफ्ट पर आ रही होगी, मे बी हियर -1.12, एक राइट पे आ रही होगी, मे बी हियर 1.4. सो व्हाट यू लुकिंग फॉर इज दिस एरिया इन द मिडल. ठीक है, अब ये दरमियान वाले एरिया आपको ये फिगर आउट करना है. नाउ हाउ डू यू फाइंड दिस एरिया? अब जब नेगेटिव वैल्यूज नॉर्मली आती थी, हम सबसे पहला काम क्या करते थे, उसको फ्लिप कर लेते थे. लेकिन इसको फ्लिप करने का फायदा नहीं है, बिकॉज अगर फ्लिप करेंगे ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी लेकिन दूसरी नेगेटिव हो जाएगी, फिर इसका भी फायदा नहीं है. ओके, सो लेट्स डू इट सम अदर वे. व्हाट वी डू इज वी से 1.4 के लेफ्ट साइड वाला सारी एरिया निकाल लेते हैं, राइट? दैट विल बी ऑल ऑफ दिस एरिया. ये पूरा रीजन निकाल लें, उसमें से हमें ये रीजन निकालना होगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, -1.12 के लेफ्ट वाला रीजन ये माइनस कर देते हैं, एंड दैट विल गिव अस द रिक्वायर्ड रीजन. ओके, लेट्स डू इट फर्स्ट. सबसे पहले काम आप क्या करेंगे, आप कहेंगे लेट्स राइट दिस एज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 1.4 minus probability of z less than -1.120. Now remember, for the table we need this form: probability of z less than a positive number. This is the form that is required for using the table. Now the first one is in the standard form, ये हम table से जाके directly देख सकते हैं. But the second one is not in the standard form. We have a negative number here. अब इसके लिए क्या करें? Let's do it on the side here as well. हम इसके लिए एक normal distribution बनाते हैं, just to understand this. आप ये mentally भी कर सकते हैं. If you have done enough practice, आप इससे हो जाएगा mentally भी. But if not, you can draw this normal distribution curve and try to understand it using that. आपको अब क्या चाहिए? ये वाला region चाहिए, -1.12 के left side वाला. ठीक है, where is that going to be? This is -1.12. What you need is the region to the left of it. ये region आपको चाहिए. अब ये region आपको directly तो नहीं मिलता, right? आप क्या करते हैं, सबसे पहले इसको flip कर लेते हैं. इसको flip करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आप कहेंगे कि ये region जो है it's equivalent to this region on the right side, right? So that means we can write this as x greater than 1.12 की probability. इसमें इसको लग सकते हैं. But again, this is also not the standard form. ये भी नहीं है standard form. ये भी आप table से जाके नहीं देख सकते. अब हम क्या करते हैं इसके लिए, हम कहते हैं कि अच्छा ये भी नहीं देख सकते, तो total probability 1 होती है. 1 में से अगर हम माइनस करते हैं इसके left वाला region ये पूरा, so इसको हम convert कर लेते हैं 1 minus probability of x less than 1.12. And now this is the standard form. ये हम जाके table से देख सकते हैं. All right, इससे हमें ये orange वाला region मिल जाएगा, which is equal to this yellow region. Okay, so this probability that we had here, ये वाली probability, we can write this as 1 minus probability of z less than 1.12. ये इस form में हम convert कर सकते हैं. It's equivalent to this. Now we have everything in the standard form. ये जाके टेबल से देख सकते हैं. एक वैल्यू आपको देखनी है 1.4 के ऊपर, दूसरी वैल्यू आपको देखनी है 1.12 के ऊपर. Let's just go to the table and see what you get for that. 1.4 के लेफ्ट वाला रीजन देख लें. अच्छा, 1.4 पे z वैल्यू पे देख लें क्या आता है आपके पास. 1.4 is here, और डेसिमल प्लेसेस कोई भी नहीं है, तो it's just 0.9192. Let's just write that here first of all. 0.9192 minus 1 minus 1.12 के ऊपर जो वैल्यू आ रही है प्रोबेबिलिटी की, 1.12 देखें जाके. 1.1 is here, 2 is here, थर्ड डेसिमल प्लेस नहीं है कोई, हमें सिर्फ ये वैल्यू चाहिए 8686.
0.8686. And now you just evaluate this and see what you get from this. It's going to become 0.9192 minus 1 plus 0.86, and that is giving me 0.7878. And that should be your final answer here. All right, I hope that makes sense. This is what we get from this first part. ठीक है, इसका आंसर छोड़ सकते हैं, राउंड ऑफ करना हो तो कर लें, 788 कर लें, but that's okay. P3 के thresholds they're around 53 to 55 for an A normally on average. कभी कम भी हो जाता है, ऐसे थोड़ा सा ज्यादा भी हो जाता है, ये भी मैक्सिमम कभी कुछ पेपर्स में 59-60 तक भी गया हुआ है अगर बहुत आसान पेपर आ जाए, वो उस पर डिपेंड करता है. Okay, so this was the first part of 5A. Achha, let's move on. Part B of this. It says Farmer Jones sells the apples to the supermarket at $0.24 each. He sells apples that weigh more than 205 grams to a local shop at $0.3 each. He does not sell apples that weigh less than 142 grams. The total number of apples grown by Farmer Jones this year is 20,000. Calculate an estimate for his total income from this year's apples. Okay, so first of all, we need to find the number of apples in each category. अब हमने probability वाली calculations जो है ना ऊपर कर ली हमने mostly, ठीक है? अब देखें, हमने probability निकाल ली है of being in this region जहां पे हम supermarket को sell कर सकते हैं, 142 से लेकर 205 grams. इसमें कितने apples आने चाहिए जो इस probability पे आते हैं 0.7878, right? How many total apples do we have? We have 20,000 total apples. Okay, 20,000 total apples. तो supermarket पे कितने जाते हैं पहले तो ये evaluate कर लेते हैं. Supermarket में कितने जाएंगे? 20,000 total है. क्या probability है कि कोई भी एक apple उस supermarket में जाएगा? 0.7878. इसको उससे multiply कर दें. Let's see what we get from this. 20,000 into 0.7878, that is giving me 15756. Okay, इतने apples तक चले गए supermarket में. Now we need to figure out कि कितने apples वो sell कर रहा है higher price पे, जो ज़्यादा बड़े हैं, $0.3 के ऊपर जो sell कर रहा है वो कितने हैं. Now, what's the probability of an apple being more than 205 grams? This is what we have to evaluate. Okay, sorry about that. अच्छा, more than 205 grams वाला हमने केस निकालना है, ठीक है? X greater than 205, ये figure out करना है. अच्छा, देखें, हमने ऊपर जो किया था यहाँ पे हमने किया था 142 और 205 के दरमियान वाला रीजन. तो हमने 205 के corresponding z value already निकाली हुई है. ये क्या आ रही थी? 1.4. तो अब वही यूज कर लें या दोबारा कर लें कैलकुलेट, इट्स योर चॉइस, बट दिस कैन बी कन्वर्टेड टू z less than 1.4. नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी, z लेस देन अ पॉजिटिव नंबर. ये तो हम टेबल से डायरेक्टली देख सकते हैं और हमने पहले देखा हुआ ऑलरेडी. ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही थी? 0.9192. यहाँ पे इनपुट कर दें 0.9192. Okay, I'm sorry about that. This is greater than sign. Okay, sorry. So I skipped that. ये बहुत बड़ी probability आ रही है. This is actually z greater than 1.4. इसका मतलब ये है, ये actually इस तरह से होएगा. दरम्यान में आपका 0 आ रहा है, right? 1.4 is here on the side. What you want is this region on the right side. अभी right side वाला region कैसे आ सकता है? आप 1 में से minus कर दें left वाला region. So you convert it to this first of all, 1 minus z greater than z less than 1.4, and that gives you 1 minus this number here, 0.9192. Let's see what this turns out to be. This is 0.0808. ये apples हैं जो वो एक higher price पे sell कर रहा है to the local shop. ठीक है, इस probability के जो apples हैं वो कितने आएंगे ये फाइंड कर लें. लोकल शॉप पे वो कितने apples sell कर रहा है? 20,000 टोटल है.
into this probability 0.0808. Let's see what this number turns out to be. 20,000 into 0.08, and that's giving me 1616. These are the two apples, two kinds of apples, the two types of apples that he is selling. बाकी सारे जो हैं वो वेस्ट हो रहे हैं. ओके, तो अब हम क्या करें, इसकी टोटल इनकम फाइंड कर लें. इनकम कितनी होएगी? 15756. ये कितने में सेल हो रहे हैं? 0.24 पे प्लस what else do we have here? 1616 into 0.3. ये evaluate कर लें. This is going to be his total income. 15726 into 0.24 plus 1616 into 0.3, and that is giving me 4266.24. That's what I'm getting. इसका round off करना चाहिए. Number of apples की बात हो रही है, नहीं, income की बात हो रही है. That's okay. So this is this 4266.24. That's the total income that he has. Okay, that is what you were looking for. Okay, that's part B. Let's move on to part C now. It says Farmer Tan also grows apples. The weights in grams of the apples grown this year follow the normal distribution with mean 82 and variance 20 squared. 72% of these apples have a weight more than W grams. Find the value of W. Okay, so now we have another normal distribution for which we know the mean, that's 182. We know the standard deviation, that's 20, right? Variance 20 squared है, standard deviation कितनी होगी? वो 20 होगी. ठीक है, अब हमें क्या करना है? W फाइंड करना है. तो हमें क्या दिया हुआ है उसने? उसने कहा है 72% of the apples have a weight more than W grams. So we can say probability of X being, weight को अगर हम X कह रहे हैं, X being greater than W is equal to 0.72. अब देखें, ये probability आपको given है, डेटा में से कुछ मिसिंग है. This is inverse normal. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको Z में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको Z में कन्वर्ट करेंगे. We can write this as probability of Z greater than something. Okay, and now we need to figure out whether the value of Z is positive or negative. So what we have is कि Z के right side के ऊपर कितना एरिया होना चाहिए? More than 0.5. Right side पे 0.5 से ज़्यादा एरिया होना चाहिए. So if you think of the normal distribution curve, where are you going to place Z on that curve? ये क्या negative side पर होगा या positive side पर होगा? That's the first thing you need to figure out. अगर हम Z को right side पे place, positive side पे place करते हैं, तो इसके right side पे कितना एरिया है? ये तो कम एरिया है. हमें ज़्यादा एरिया चाहिए right side के ऊपर. तो अगर हम Z को left पे place करते हैं इधर, तो इसके right side पे ज़्यादा एरिया होएगा, which can be 0.72. Okay, तो हमें Z को negative side पे place करना पड़ेगा. इसका मतलब है Z's value is actually negative. Z is actually negative here. Okay, तो इसका मतलब ये है Z is negative. ये आपको पहले figure out करना पड़ेगा. ठीक है, अब क्या करना है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म इज Z लेस देन पॉजिटिव. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? दिस इज द होल रीजन दैट वी आर लुकिंग फॉर. ये एरिया उसने बताया है कितना है? दिस इज 0.72. इसका मतलब ये है, अगर हम इसको फ्लिप कर लें, हम कहें कि हमारे पास अगर वही कर्व इस तरह से होती साइड पे, तो जो Z की पॉजिटिव वैल्यू होगी इस साइड पे, इसके लेफ्ट साइड वाला रीजन भी तो उतना ही होएगा. तो हम इसको फ्लिप कर लेते हैं. बस जो ये येलो रीजन है वही ये वाला रीजन होएगा अगर हम Z की कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यू यूज कर लेते हैं और उसके लेफ्ट वाला एरिया देख लेते हैं. सो दैट्स व्हाट वी डू. वी से अच्छा ठीक है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ Z के राइट साइड पे 0.72 एरिया होना चाहिए. तो हम ये भी कह सकते हैं कि Z की जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यू होगी विद द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू, जस्ट द साइन चेंज्ड, वो कितना होएगा? वो भी 0.72 होगा. इसका फायदा क्या हुआ? ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. नाउ वी कैन गो टू द टेबल एंड फाइंड कि ये Z की वैल्यू क्या होनी चाहिए. ठीक है, Z की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हमें टेबल से.
0.72 is the probability, remember, ये probability का number है। ये जाके हम देखेंगे टेबल से कि इसके corresponding z value क्या आती है। Let's look for that. 0.72, remember probability के 4 decimal places दिए होते हैं, so it's like 7200, right? अच्छा, 7200 ढूंढते हैं हम जाके टेबल में। Just get rid of all of this first of all. Okay, 0.7200. Where is that? Okay, 7200 से छोटा नंबर हमारे पास ये आ रहा है। इसके corresponding the values that we have are 0.5 and 8. So we have probability of 0.7200, ये हमें find करनी है। इसके corresponding z value हमारे पास जो अभी तक आ रही है, that is 0.58. But then this is corresponding to 0.7190. तो हमें कितना और ऐड करना पड़ेगा? एंड पे हमें 10 ऐड करना है इसके अंदर। राइट साइड पे जाके देखते हैं 10 किधर आ रहा है। This is 10. तो third decimal place of z is therefore going to be 3. So it's 0.583. All right? Yes, that's correct. Ghulam Murtaza, that's right. That's 0.583. This is what we're getting. But remember, this is not the value for z. Z की असल value negative थी, तो हम क्या कहेंगे? The actual z value is minus 0.583. This is what we were looking for. ठीक है, ये आ गई। अब फॉर्मूला में डालें और आपके पास जो अननोन है वो फिगर आउट कर लें। Z equals x minus mu over sigma. Right? That's the formula that you have. Input values in that. Z की जगह पे आप डाल दें minus 0.583. That equals x. X की जगह पे आपके पास क्या होगा? W minus the mean. Mean is 182. Divided by sigma, that is 20. Evaluate this and see what the value of W turns out to be. 20 into minus 0.583 plus 182. And that's giving me 170.34. That's the value of W that we're getting. 170.34. This is the value of W. ठीक है, I hope that makes sense. We're talking about weight here, तो weight तो decimals में हो सकता है, and that's perfectly okay. You can leave it like this. Third step, third step कौन सा आ रहा है? अच्छा, इसमें आप डायरेक्टली करना चाहें तो कर सकते हैं। That's okay. That's perfectly okay. आप डायरेक्टली लिखना चाहें? अच्छा, you're probably saying this step. नहीं, वो करना जरूरी नहीं है। You can write down the final value. So इसमें working में आपको एक तो बस ये देखना है कि आपने ये लिखा, उसके बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बस ये z की वैल्यू 0.583। तो जो इम्पोर्टेंट है वो है कि 583 नंबर नजर आना चाहिए एग्जामिनर को, और वो माइनस में होना चाहिए इवेंचुअली, ये नजर आना चाहिए एग्जामिनर को। ये 0.72 आपने कहीं पे यूज किया हो, ये एग्जामिनर को नजर आना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट स्टेप्स वो आप अपनी तरह से कर सकते हैं जिस तरह भी आप ज्यादा कंफर्टेबल है। ओके, अच्छा, लेट्स मूव ऑन। Okay, we have 2 more questions to go. Question number 6. Sajid is practicing for a long jump competition. He counts any jump that is longer than 6 meters as a success. On any day, the probability that he has a success with his first jump is 0.2. For any subsequent jump, the probability of success is 0.3 if the previous jump was a success, and 0.1 otherwise. Sajid makes 3 jumps. Draw a tree diagram to illustrate this information, showing all the probabilities. I think it's pretty straightforward. Find the probability that Sajid has exactly 1 success, given that he has 1 success. Okay, चलिए ये कर लेते हैं इसका। I think last part थोड़ा सा tricky लग रहा है मुझे. Let's do this. Less than 0.5. Why do you subtract from 1? I'm not sure, Osman, if I understand what you mean by that. When area is less than 0.5. अच्छा, यहाँ पे कहाँ गया? Less than 0.5. अच्छा, ये less than 0.5 अगर होता, अगर less than 0.5 होता, okay, so less than 0.5 होता ना, उसका मतलब ये होता
राइट साइड पे कम एरिया है, राइट साइड पे कम एरिया होता तो फिर वो ये वाला रीजन होता और z की वैल्यू पॉजिटिव होती, राइट। हमें तो ये एरिया चाहिए होता फिर। अब ये एरिया डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते टेबल से, तो फिर आप करते हैं कि अच्छा अगर राइट वाला एरिया लेट्स सपोज 0.2 होता तो लेफ्ट वाला होता 0.8, राइट। तो इसलिए फिर हमें लेफ्ट वाला एरिया यूज करना पड़ता। हम कहते हैं कि अच्छा इसके लेफ्ट पे जो आपके पास एरिया आ रहा है दैट इज 1 माइनस 0.8 और फिर उससे आपको 1.1 माइनस 0.2 उससे आपको टेबल से वैल्यू मिलती। आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर रेफरिंग टू। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मोर डिटेल्स आप वो S1 क्रैश कोर्स में जाके देखेंगे, आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फर्स्ट 2 वीडियोस में ना ये फर्स्ट 2 वीडियोस में नहीं, इनवर्स नॉर्मल वाली जो वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा वो एक्सप्लेन। ओके अच्छा, let's look at this. Question number 6. Sajid is practicing for a long jump competition. He counts any jump that is longer than 6 meters as a success. Acha. Longer than 6 meters is a success. The probability that he has a success with his first jump is 0.2. Okay. यहाँ पे हम बना लेते हैं 3 jumps कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगी हमें। First jump could either be a success or a failure, right? Success की probability क्या है 0.2, failure की क्या होगी 0.8. Now, for any subsequent jump, the probability of a success is 0.3 if the previous jump was a success. Okay, so next time, 0.3 probability होगी success की, अगर previous time success थी, and 0.1 otherwise, यानी अगर पिछली jump पे failure था, तो next time जो है वो 0.1 probability of success की. So ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 and this is going to be 0.9. ठीक है, अच्छा. And he makes 3 jumps, तो अब इसके आगे उसको इस तरह कंटिन्यू कर लें। बस यहाँ पर एक और जंप होगी, थर्ड जंप, rather be a success or a failure, success, failure, success, failure. You have success and failure. This is what the tree diagram is going to look like. इसकी probabilities आपको लिखनी पड़ेंगी। अब success के बाद success की probability है 0.3, 0.7. Failure के बाद success की probability is 0.1, so that's 0.1 and 0.9, and similarly you have 0.3, 0.7 here, 0.1 and 0.9 here. That is what your tree diagram is going to look like. Okay, let's move on. It says find the probability that Sajid has exactly 1 success given that he has at least 1 success. Okay, now this is conditional probability given that आपके पास आ गया, so you are given something, उसको use करके आपने कोई probability निकालनी है. Remember conditional probability formula, it looks like this. It's not given in the formula sheet. Please make sure you remember this. A intersection B divided by probability of B, right? So what that means is we are looking for a probability of exactly 1 success. Probability of 1 success given that he has at least 1 success. So we can say at least 1s. That's what we are looking for. Achha. Now, what is this going to be equal to? It's equal to probability of 1s intersection at least 1s divided by probability of at least 1s. ये आपने फिगर आउट करनी है, एक इंटरसेक्शन फिगर आउट करना है और एक नीचे वाली प्रोबेबिलिटी फिगर आउट करनी है, ठीक है? Okay, now let's figure this out. नहीं, ये वर्ड्स में लिखना जरूरी नहीं है. This is just for your own understanding कि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं. ये लिखना जरूरी नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हैं. That's perfectly okay. अच्छा, अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी कैसे फिगर आउट करनी है. एटलीस्ट 1 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, ये देखते हैं क्या आता है. एटलीस्ट 1 सक्सेस का क्या मतलब है? वी कैन से अगर हम ये वाला केस माइनस कर दें 1 में से, तो बाकी सारे केसेस में क्या होगा? एटलीस्ट 1 टाइम तो सक्सेस आ रही होगी. So that's what we can do. We can say the total probability is 1. If we subtract from that the case when we have all failures,
राइट, बाकी सारे केसेस में एटलीस्ट वन सक्सेस आ रही है, तो ये डिनोमिनेटर हम इस तरह फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो ये वाला केस हम कैसे कर सकते हैं, दिस इज द सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एफ्स, एंड व्हाट इज दैट गोइंग टू बी 0.8 into 0.9 into 0.9. 0.8 into 0.9 into 0.9. What does that give you? 0.8 into 0.9 into 0.9. That is 0.648. ठीक है, ये आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई, डिनोमिनेटर आ गया आपके पास. नाउ इट सेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस इंटरसेक्शन वन सक्सेस. अच्छा, बेसिकली वन सक्सेस कहां पर आ रही है, एटलीस्ट वाला कंडीशन तो फिर ऑलरेडी मीट हो ही जाएगी ना, तो वन सक्सेस एग्जैक्टली कहां पर आ रही है वो आपको फिगर आउट करना है. वन सक्सेस किधर है ये देखते हैं. You could have S, F, F. That's one possibility. You could have failure, and then success, failure. Then you could have failure, failure, success. These are the three cases that you have. Okay, that satisfy that condition जहाँ पे exactly one success आ रही है. ये हम यहीं पे evaluate कर लेते हैं. 0.2 into 0.7 into 0.9. This one is 0.8 into 0.1 into 0.3. And then you have 0.8 into 0.9 into 0.1. Now let's evaluate these numbers. 0.8 into 0.1 into 0.2 into 0.7 into 0.9. That is giving me 0.126. 0.8 into 0.1 into 0.3, that is 0.024. And then finally we have 0.8 into 0.9 into 0.1, that is 0.072. ठीक है. अच्छा, is that okay? Yes, thank you for that. ये हमने probability of failure निकाला है, so that's correct. ये हमने failures की probability निकाली है, तो अब at least one success की निकालनी थी, वो हमने निकाली नहीं यहाँ पे, वो add कर लें यहाँ पे. At least one s यहाँ पे add कर लेते हैं. ये हमने अभी 3s की निकाली है अभी सर. At least one s, ये कितनी हो जाएगी, 1 minus 0.648. Let's see what that turns out to be. That's 0.352. ठीक है, वो भी हमने यहाँ पे निकाली नहीं थी. 0.352. This is at least one success. ये हमें चाहिए थी, ये हमने फाइंड कर ली. दूसरा अब क्या है, वन सक्सेस वाली प्रोबेबिलिटी, ये अब साइड पे लिख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ वन सक्सेस ओनली. उन तीनों केसेस को ऐड कर लें. SFF, FSF, and FFS. All right. So 0.126 plus 0.024 plus 0.072. Let's add these three together and see what that gives us. Okay, so this is giving me 0.126 plus 0.024 plus 0.072. That seems to be okay. The calculation of the check 0.8 into 0.1 into 0.3. I'm sorry, I'm doing a lot of careless errors today. Yeah. Okay, ये मैंने यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है. I'm sorry about that. This is 0.8, 0.1, and 0.7. This should have been 0.8 into 0.1 into 0.7. I wrote 0.3 there, unfortunately. Shoot. Let's do this and see what we get from this. 0.8 into 0.1 into 0.7, that is 0.056.
अच्छा 0.126 plus this and this. Okay, this turns out to be 0.254. Let's find that required probability now and see what that turns out to be. So that required probability, I'm not going to write that whole statement again. Numerator, ये क्या आ गया? जब वन सक्सेस आ रही है तो सब में एटलीस्ट वन सक्सेस तो हो ही रही है, तो वो इंटरसेक्शन भी आपका ये होएगा. न्यूमरेटर में आपके पास आ गया 0.254, डिनोमिनेटर में एटलीस्ट वन एस वाला केस विच इज 0.35, ये भी 2 होना चाहिए था यहाँ पे. आई थिंक आई नीड टू go back to sleep and then do something again. This should have been 0.352 instead of 0.358. So this is 0.352 here. So 1 minus 0.648, this is 0.352 here. Okay, let's see what that turns out to be. This is giving me 0.7216. And that is what your final probability should be. Okay, all right. So that was part B. Let's look at the next one. It says, on another day, Sajid makes 6 jumps. All right. On another day, Sajid makes 6 jumps. Find the probability that only his first 3 jumps are successes or only his last 3 jumps are successes. There's an or between the two cases. Only his first 3 jumps are successes or only his last 3 jumps are successes. तो क्या केसेस हो सकते हैं आपके पास? First 3 jump successes आ गए, क्या मतलब है? Total 6 है, right? You could have success, success, success. It says only first 3 are successes. That means the last 3 are going to be failures. या तो ये हो सकता है, या फिर आपके पास दूसरा केस क्या हो सकता है? Last 3 are successes. That means first 3 are failures. So F into S for F and then S. These are the 2 cases that you have. Okay. अच्छा, अब देखें इसका जो ट्री डायग्राम होगा उसमें तो बहुत सारी ब्रांचेस आ जाएंगी. अब देखें पहले 2 होंगी, ठीक है, फिर 2 into 2 into 2, 2 raised to power 6. एंड पे जाके आपके पास ये कोई 64 ब्रांचेस बन जाएंगी. तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू ड्रॉ दैट ट्री डायग्राम, बहुत ही लंबा हो जाएगा. You can figure this out without that. Okay. Usman, this is not binomial. We're not talking about कि कितनी सक्सेसेस आएंगी. इसमें एक सर्टन, इसने एग्जैक्टली बताया हुआ कि फर्स्ट 3 सक्सेसेस होनी चाहिए, उसके बाद 3 फेलियर्स होने चाहिए, और फिर या फिर फर्स्ट 3 फेलियर्स होने चाहिए, उसके बाद सेकंड 3 सक्सेसेस होने चाहिए. इट्स नॉट बाइनोमियल. बाइनोमियल कंडीशन पे नहीं आता है, क्योंकि तो स्पेसिफिक उसने सीक्वेंस दिया हुआ है. ऑलराइट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द नंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस. तो ये आपको वैसे इवैल्यूएट करना पड़ेगा, ठीक है. या तो ट्री डायग्राम कर सकते थे, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाता, और उसको डायरेक्टली वैसे सोचना पड़ेगा. नाउ थिंक अबाउट द कंडीशंस दैट आर गिवन. अगर देखें फर्स्ट टाइम क्या होता है, फर्स्ट टाइम तो उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.2, और फेलियर की क्या है, 0.8. तो इसमें जो फर्स्ट नंबर्स आपके पास आ रहे होंगे वो तो सिंपली यही होंगे. फर्स्ट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.2 और फर्स्ट फेलियर की प्रोबेबिलिटी जहां पर आएगी दैट इज 0.8. ठीक है, फर्स्ट टाइम तो हम यहाँ पे आ रहा होगा. लेकिन उसके बाद भी वो कंडीशंस है. उसकी क्या कंडीशंस है? अगर प्रीवियस जंप जो है वो सक्सेस थी तो नेक्स्ट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.3. और अगर प्रीवियस जंप फेलियर थी तो नेक्स्ट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.1 होगी. ओके, नाउ यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. अब देखें फर्स्ट सक्सेस थी तो नेक्स्ट सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी 0.3, और नेक्स्ट की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी इज अगेन 0.3. इसके बाद फेलियर शुरू हो गया, राइट. अब अगर प्रीवियस जंप सक्सेस थी तो नेक्स्ट में फेलियर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, सक्सेस के बाद सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 0.3 थी. सक्सेस के बाद फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फिर, 0.7. ओके, अब इस पॉइंट पे आप हैं यहाँ पे. अब फेलियर हुआ एक, फेलियर के बाद दोबारा फेलियर की प्रोबेबिलिटी, फेलियर के बाद सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0.9, एंड देन अगेन अनदर 0.9.
This is what you get for the first case. Okay, I hope that makes sense. Let's do the same thing for the second one now. First the failure है, ये मैं पता है. ठीक है, उसकी probability 0.8 है. Now if the previous is a failure, what's the probability of the next being again a failure? That's 0.9, and then again 0.9. And now we are here. Failure के बाद success की probability वो तो कम हो गई थी. That was 0.1. ठीक है, लेकिन अब उससे नेक्स्ट टर्म पर आएंगे, इस वाले पे. प्रीवियस सक्सेस है, सक्सेस के बाद दोबारा से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3. So this is 0.3 and the next one is again 0.3. This is what we get from this. ठीक है, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, and that's going to give you the result. Okay, 0.2 into 0.3 into 0.3 into 0.7 into 0.9 into 0.9. एक ये evaluate करना है आपको. ये देखते हैं क्या आता है. This is 0.0102. राइट, आगे 1 ही आता है, लेकिन इनफैक्ट ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा रखने हैं. दिस इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. कैलकुलेशन में ज्यादा आपको चाहिए तो और लिखना आगे आगे आपको सारे 0.6. ओके, व्हाट अबाउट द सेकंड वन? ये इवैल्यूएट करें. 0.8 into 0.9 into 0.9 into 0.1 into 0.3 into 0.3, and that gives us 0.005832. Okay, you just add these two numbers. दोनों को add कर लें, देखें आपके पास क्या आता है. ठीक है, that's going to give you the total probability, and that turns out to be 0.016038, and that's your final answer. Okay, I hope that makes sense. That was part C of this question. Let's move on. Question number 7. Okay, so now we have permutations and combinations. A group of 15 friends visit an adventure park. The group consists of 4 families: Mr. and Mrs. Kenny and their 4 children, Mr. and Mrs. Liza or Lisa, however you pronounce that, and their 3 children, and Mrs. Martin and her child, Mr. and Mrs. Nantis. Okay, so how many people do we have in total? We have 15 people in total. Okay, so these are 6. Then you have 5 here, 11, 2 here, and 2 here. Yeah, so that's total 15 people. The group traveled to the park in 3 cars. One containing 6 people, one containing 5 people, and one containing 4 people. The cars are driven by Mr. Lizo, Mr. Martin, and Mr. Nantis, respectively. In how many different ways can the remaining 12 members of the group be divided between the 3 cars? Acha. Respectively means आपके पास अब first car में कितनी spaces बची? You have 5 spaces left in the first car. You have 4 spaces left in the second car, and you have 3 spaces left in the third car. Okay. अब बाकी 12 लोग रहेंगे आपके पास. अब क्या करेंगे? Remember, इसमें order matter नहीं करता as such, right? Because गाड़ी में बैठ के वो किस सीट पे कौन बैठ रहा है, that's irrelevant, right? तो बाकी 12 में से आपने क्या करना है? 5 लोगों को एक कार में प्लेस करना है. Let's do that. So you have 12. Out of those 12, you have to select 5 people for the first car. So that's 12C5. Now you've already selected 5 people. Okay? Out of those 12, जिनको आपने place कर दिया first car में, how many people are we left with? You're left with 7 people. Out of those 7 people, you have to place 4 in the next car. All right, so that's 7C4. ठीक है? And now how many people are we left with? 7 में से आपने 4 और place कर दिए. You have 3 left. उन तीनों को आपने यहाँ पे third में place कर देना है. That's just one way of doing this, right? बाकी तीनों उसमें चले जाएंगे. But if you want, you can write 3C3 there, and that should give you the result. Okay? Let's evaluate this. 12C5 into 7C4 into 3C3, that's just 1, and that's giving me 27720.
ओके, लेट्स जस्ट राइट दैट हियर। इसमें आपने राउंड ऑफ नहीं करना, बिल्कुल एज इट इज लिखना है। राउंड ऑफ आप तब करते हैं जब आपके पास एग्जैक्ट नंबर नहीं आ रहा होता, ठीक है। डेसिमल्स में की वैल्यू आ रही है उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। यू आर नॉट गोइंग टू राउंड दीज नंबर्स ऑफ, ठीक है, इसको पूरा लिखेंगे 27720। अच्छा, द ग्रुप एंटर द पार्क बाय walking through a gate one at a time. Okay, there are 15 people, right? Remember? Now, in how many different orders can the 15 friends go through the gate if Mr. Lizo goes first and each family stays together? Okay, so now this is permutation, right? We're talking about order. The order is important here. Let's say this is the gate. Is gate ke through na jana, right? And there are 15 of those people. Let's represent those people with boxes. Boxes representation यहाँ पे हम use कर लेते हैं. Okay, so there are 15 boxes in total initially. Okay, let me just draw those 15 boxes. We have one in the middle. And then we would have to divide the rest into 7 and 7s. We have, let's say, one here and one here. We have 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, so these are 15 boxes in total, right? Which represent those 15 people. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yeah, so these are 15 boxes. ठीक है? अच्छा, अब इसमें conditions देखते हैं. Conditions क्या है? सबसे right side पे there has to be Mr. Liza. So we know in this box, सबसे right side पे, there's one person who has to be there, Mr. Liza. Okay? Let's represent him. यहाँ पे Mrs. Liza भी है. Okay. तो हम ऐसा करते हैं. इसको हम चलें L से represent कर लेते हैं. This person is fixed. This person has to be there. Okay? इसको आप change नहीं कर सकते. He will be going first. Okay? Now, each family has to stay together इनके बाद. Okay? अब अगर मिस्टर लाइजो पहले जा रहे हैं, इनकी फैमिली तो इनके साथ ही होगी ना, वो तो पीछे नहीं जा सकती, तो उनकी तो अरेंजमेंट वो भी कहीं पे और नहीं जा सकते, तो ये एक तरह से फिक्स हो जाएंगे, राइट? मिस्टर लाइजो के साथ इनके जो बाकी 3 लोग हैं, दे हैव टू बी देयर. ऑल राइट, आई होप दैट मेक्स सेंस. सो बाकी कितने लोग हैं इनके साथ? मिस्टर लाइजो के साथ you had 5 total people, the remaining people are 4. तो आप क्या करेंगे? आपके पास एक बॉक्स होगा यहाँ पे, 4 बॉक्सेस को हम मर्ज कर देंगे, 2, 3, 4. ये 4 बॉक्सेस मर्ज करके हमने क्या किया, इसमें हमने बाकी लोग जो मिस्टर लाइजो की फैमिली में है वो आ गए. सो मिसेस लाइजो प्लस हर 3 चिल्ड्रन. सो देयर आर 4 पीपल इन दिस बॉक्स. ये यहीं पे रहेंगे, ठीक है? ये अब किसी और स्पेस में नहीं जा सकते, ठीक है? नाउ कीप दैट इन माइंड. अच्छा, अब बाकी फैमिलीज में भी इकट्ठे रहना है, वो कहाँ पर होंगी? देयर आर 3 अदर फैमिलीज. एक फैमिली में 6 लोग हैं, हम 6 बॉक्सेस और को मर्ज कर देते हैं. सो वी हैव 2, 3, 4, 5 and 6. Yeah, so we have 6 people here, Mrs. and Mr. and Mrs. K plus 4 children. So we have 2 here and plus 4 children. There are 6 people in total here. Yeah, 6 people from Mr. and Mrs. Kenny's family. 6 लोग यहाँ पर आ गए. And then the remaining 2 families have 2 people each. उनके लिए हमने यहाँ पे कर लिया. तो यहाँ पे हमारे पास 2 लोग आ रहे हैं M की फैमिली से, Mr. and Mrs. Martin की फैमिली से. We have Mr. and Mrs. Lantis, उनकी फैमिली से 2 लोग यहाँ पर आ रहे हैं. अच्छा, now we need to figure out इनकी arrangements कैसे करनी है. Mr. Lizo is fixed here. He is not going to move. Okay? Acha. His family is also here. His family also cannot move. Right? अब इनकी आपस में arrangements कितनी हो सकती हैं? इनकी आपस में arrangements कितनी हो सकती हैं? They can be arranged in 4 factorial ways. There are 4 people, right? इनकी अंदर बॉक्स के अंदर कितनी arrangements होंगी? 4 factorial. ठीक है? So this is handled now. Mr. and Mrs. Lizo's family is handled now. ये साइड पर हैं, ये इनकी बाकी सबसे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? इनका और कहीं पे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. ये इनके 4 फैक्टोरियल वेज हो गए अरेंजमेंट के, ये हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है? अच्छा, now we need to think about
these remaining 3 boxes, ये आपस में भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, राइट? ये आपस में भी अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा, इन बॉक्सेस की कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन बॉक्सेस की आपस में कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती हैं? देयर आर 3 बॉक्सेस इन टोटल। ये बॉक्सेस आपस में अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज में। ओके, फैमिलीज आगे पीछे हो सकती हैं, पूरी की पूरी फैमिलीज, राइट? दैट्स 3 फैक्टोरियल वेज बिकॉज वी हैव 3 बॉक्सेस। अब इन बॉक्सेस के अंदर कितनी अरेंजमेंट्स हैं वो देखते हैं। We have Mr. and Mrs. Nantis family. In how many ways can they be arranged? 2 factorial. Then Mr. and Mrs. Martin's family, 2 factorial for that. Then Mr. and Mrs. Kenny's family, 6 factorial for that. So we have 2 factorial for this, and then 2 for this, and 6 for this. And 3 factorial for arranging these 3 boxes. ओके और फिर मिस्टर एंड मिसेस लेन, ये तो मिस्टर एंड मिसेस लाइजा, वो तो अपनी पोजीशंस, उनकी फैमिली जो है वो तो वहीं पे रहेगी, वो फिक्स्ड है। उनकी आपस में अरेंजमेंट कितनी हो सकती है? 4 फैक्टोरियल सिर्फ। You just multiply all of these numbers and that is going to give you the result. Okay, let's see what this turns out to be. 3 factorial into 2 factorial into 2 factorial into 6 factorial into 4 factorial. And that turns out to be 414720. That's your final answer. Okay, let's move on to part C now. It says in the part, the group enters a competition which requires a team of 4 adults and 3 children. In how many ways can the team be chosen from the group of 15 so that the 3 children are all from different families? Okay. ठीक है, adults पे कोई condition नहीं है. How many adults do we have? Let's count them. Mr. and Mrs. Kenny, that's 2. Mr. and Mrs. Liza, 2 more. Mrs. Martin, 1. And Mr. and Mrs. Landis. There are 7 adults in total, right? Or 8 children. So we have 8 adults in total. And, no, sorry, 7 adults. I counted 7. I wrote 8. 7 adults and 8 children. ये आपके पास total होगा, ठीक है? Now, out of 15, we have to choose this team. 7 adults में से कितने adults choose करने हैं? 4 adults. तो उनमें तो कोई condition नहीं है. That's just 7C4. Adults के लिए there is no condition, right? So adults can be chosen in 7C4 ways. That's straightforward. Okay. लेकिन जो children हैं, उनका क्या है? They have to be chosen all from different families. अब देखते हैं children कौन सी families में आ रहे हैं. Last family में children नहीं है. Okay. तो इसमें से तो कुछ नहीं यूज करना. बाकी तीनों families में से एक-एक आपने child लेना है. तो फर्स्ट फैमिली से मिस्टर मिसेस केनी की फैमिली से एक चाइल्ड लेना है. वो कितने वेज में हो सकता है? देयर आर 4 चिल्ड्रन. आउट ऑफ 4 यू हैव टू सेलेक्ट 1, सो दैट्स 4C1, राइट? सो आपके पास आ गया 4C1. यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दिस इज फॉर एडल्ट्स, जस्ट टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड. ये हम ले रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस मार्टिन थे, केनी. मिस्टर मिसेस केनी की फैमिली से 4 में से हम 1 चूज कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, फिर हमें क्या करना है? मिस्टर मिसेस लाइजो के 3 चिल्ड्रन है, उनमें से एक चूज करना है. So that's 3C1. Okay. And then Mr. and Mrs. Martin have only 1 child. तो वो तो 1 में से 1 choose करना है. वो आप बेशक लिखें ना लिखें, एक ही बात है. And that's going to give you the result. Okay, let's evaluate this and see what that turns out to be. 7C4 into 4C1 into 3C1 into 1C1. And that turns out to be 420. Okay, that's part C here. All right, let's move on to the next part. It says, in how many ways can the team be chosen so that at least one of Mr. Kenny and Mr. Lizo is included? At least one of them is included. Okay. अब देखें children पे तो कोई condition नहीं है ना? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले. We have some adults and we have some children. अब देखें children पे कोई condition नहीं है. Total adults कितने थे? 7. Children were 8.
And how many do we have to choose? 4 adults and 3 children. Children के लिए, so you just have to do 8C3. 8 children में से you have to choose 3 randomly. There's no restriction on that. Okay. Adults पे there's a condition, and that is that at least one of Mr. Kenny and Mr. Lizo has to be included. या तो Mr. Kenny included होंगे या Mr. Lizo included होंगे या फिर दोनों included होंगे. ये नहीं हो सकता कि वो दोनों ही ना हो. अब इसमें 2 possibilities हो सकती हैं. या तो आप वो वाला केस निकालें जहां पे दोनों ही नहीं सेलेक्ट हुए और फिर टोटल नंबर ऑफ केसेस में से वाला केस माइनस कर दें. दैट्स वन पॉसिबिलिटी. या फिर आप इन सारे केसेस को अलग अलग कंसिडर कर लें. दैट्स आल्सो नॉट टू मेनी केसेस. आप डायरेक्टली कर लें. आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं एक केस वो है मिस्टर केनी सेलेक्ट हो रहे हैं और मिस्टर लाइजो नहीं हो रहे. एक और केस हो सकता है मिस्टर केनी नहीं हो रहे और मिस्टर लाइजो हो रहे हैं. Right? And there's another possibility. Mr. Kenny select हो रहे हैं और Mr. Lizo भी select हो रहे हैं. These are the 3 cases that you have. Okay. Now, you have 7 adults in total. Out of them, you have to choose how many? You have to choose 4. 4 choose करने हैं total. अब इन 2 का तो आपने already decide कर लिया. First case, right? These are 3 different cases that you have. 1, 2, 3. फर्स्ट केस में आप कह रहे हो कि मिस्टर केनी को सिलेक्ट करना है और मिस्टर लाइजो को नहीं करना, तो बाकी कितने अडल्ट्स पे आपके पास चॉइस है? अब 7 में से 5 अडल्ट्स रह गए. उन 5 में से अब आपको क्या करना है? कितने और चूज करने हैं? मिस्टर केनी इज ऑलरेडी सिलेक्टेड. 4 टोटल करने थे, 3 और चूज करने हैं आपको. सो दैट्स 5C3. ओके. एंड एग्जैक्टली द सेम लॉजिक विल अप्लाई फॉर द नेक्स्ट केस एज वेल, बिकॉज 7 में से आपके पास चॉइस किन पर रह गई है? बाकी 5 के ऊपर. मिस्टर केनी और मिस्टर लाइजो को तो डिसाइड कर लिया ऑलरेडी कि मिस्टर केनी को नहीं रखना, मिस्टर लाइजो को रखना है. बाकी कुछ 5 बचे. उन 5 में से कितने और सेलेक्ट करने हैं? मिस्टर लाइजो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं, तो 3 और सेलेक्ट करने हैं. दैट्स 5C3. एंड देन इन द लास्ट केस यू आर सेइंग मिस्टर काइनो और मिस्टर लाइजो दोनों सेलेक्ट करने हैं. तो टोटल 7 थे. 7 में से कितने बाकी बचे आपके पास? जिन पे चॉइस है आपके पास 5. कितने में से सेलेक्ट करने हैं? 5 में से सेलेक्ट करने हैं. 5 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? अब आपको 2 ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं, 4 करने थे. So that's just 5C2. चिल्ड्रन का तीनों के अंदर क्या होगा? 8C3, 8C3. This is what we get from this. ठीक है, ये आपके पास 3 केसेस बने. All you have to do is just multiply them because you're saying 5 में से ये 3 adults चूज करने हैं and 8 में से 3 children चूज करने हैं. ये evaluate कर लें. ये सेकंड केस आ गया, ये evaluate कर लें. ये थर्ड केस आ गया, ये evaluate कर लें. इन तीनों केसेस को हम ऐड कर लेंगे and that's going to give us our final result. Let's do this. 5C3 into 8C3 into so what does that give us? That gives us 560. Second bhi wahi hai, 560. And then the last one is 5C2 into 8C3, and that is 560 as well. तीनों 560 आ रहे हैं. इन तीनों को add कर लें and see what that gives you. That is 1680, and that's your final answer. Okay, and that's it. That completes our paper. I hope that was helpful. If you found this helpful, make sure to leave a like there on the video because it helps with an engagement. It helps find it helps other people finding this video as well. Search results mein. Or if you haven't already, subscribe to the channel. Also have a look at the description of this video. You'll find a lot of other useful content that I've uploaded, including complete syllabus recordings for paper 1, paper 3, M1 and S1. You'll find all the concepts covered there along with topical past paper practice. And also you'll find a link to some quick revision videos, which a lot of students find helpful every year before their exams for their last minute revision. And also I've solved a lot of other past papers from recent years, 2021, 2022, and March 2023. You'll find them in the yearly past papers playlist as well. The link for that is also in the description. I hope this was helpful. You're all welcome. You're welcome, 𝗲𝗀𝗿𝗶, and also thank you for your regular comments and correcting my careless errors as well. I'll see you again in the next video. So I'll be starting P1 in some time and then M1 at 8 p.m. later, inshallah. Okay.
If you want regular updates about the live streams, you can also follow me on Instagram. I post there regularly कि मैं कौन सी live stream किस time पे कर रहा हूँ. Okay, I'll see you again. Allah Hafiz.